It's the genuine share of the people of Kerala, and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring, or redefining our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes. So please note all these points and please redefine this center-state financial relations. Thank you. Thank you, Manisi Santosh Kumar P. Please. Those who wants to associate, kindly send your names here. Mani Shri Shakti Singh Gohil ji. मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में हैं। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज़ फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है, और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा तो उसे कैद में मिलेगा, और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार की रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो। तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहाँ गया और फिशिंग बोट वहाँ रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियाँ उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी। वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहाँ पे हुआ था, पर राशि बहुत कम है, कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में, और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं। तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी कि
जीपीएस दिया कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापिस रहेगा। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे एक फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए, जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Richaria had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some have been recognized with the Genome Savior Award, which is a welcome recognition for their contribution. We also need to remember the role of women farmers. So, government needs to identify and support such seed savers, train them for maintaining genetic purity of seeds, characterization and cataloging under a scheme providing infrastructure facilities and stipends. Surely, government will agree with me, sir, that desi seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become the basis for spread of organic and natural farming. Sir, while George Fernandez, who led an aggressive campaign against the signing of GATT and WTO treaty, who was an inspiration for me, I am proud that in 2009, when the regulator GEAC approved BT brinjal, it was again my party leader Nitish Kumar who opposed this. And the then Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh, in 2010, ordered a moratorium on GM crops, which continues till the present government approved GM mustard last year, sir. In seed saving, natural and organic farming, I got trained by people like Dr. Debul Dev, who have conserved 1,400 paddy varieties, and Subhas Palekar, who makes Jivamrita out of desi cow dung, and the millet man of India, Dr. Khadar Wali, all of whom advocate desi seeds, sir. Two of them are recipients of Padma Awards by the present government. Each of them believe that there cannot be organic or natural farming without desi seeds. Definitely not GM crops. Thank you. Thank you, माननीय हेगड़े जी। माननीय श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूँ। मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले,
मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగవాలని చెప్పింది నా డిమాండు. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్చూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్లను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మాకు ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం ప్యారలల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిధులకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకల పైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट है एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट, प्लीज। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी। Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling.
though the mandate other BCs whose income is higher than the mandated the labeled mandated limit were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised it to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit and ensure that 3-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri M. Muhammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir, the Jal Jeevan Mission, a program of this government and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, water is the basic necessary for any lives. The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section. Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani M. Muhammad Abdullah ji. Mani Shri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, तुसीं आपां नूं समां दित्ता। सो अज असीं पर्यावरण का पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण जिहड़ा सब तो मारू सिद्ध हो रहा, उहदे उत्ते असीं संसद का ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां। सो गुरु नानक पातशाह ने अज तो 500 साल तो वध समा पहला जो उपदेश दिता सी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। अज सारा विश्व ता एनवायरमेंट के पोल्यूशन तो पीड़ित आ, उहदे विच जिहड़ा भारत
ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 21,08,000 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 37.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦਾ 1.37% ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, 500 ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय संत बलवीर जी, 3 महीने का 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री P. विल्सन। Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christian, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country encompassing a wide range of religious, cultural and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity. Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371. A to H of Constitution, and the UCC would destroy this constitutional guarantee. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities, but also for the majority religion. Additionally, Article 29, which protects the rights of the minorities to preserve and protect their distinct culture, will erode the unique culture and traditions of minorities. Thirdly, UCC would affect the advantages given to the Hindu undivided family in property and taxation. एक नई शहर है, त्योहारों की लहर है, पप्पा की भक्ति लेके संग मनाएंगे उत्सव के रंग, लेकर माँ दुर्गा की आन बढ़ा
पल की शान। दियों की रोशनी लिए जब हम चले तो दिवाली जगमगा उठे हर गली मोहल्ले। मारुति सुजुकी सुपर कैरी, त्योहारों का सुपर पावर। The sanctity of these sacraments, tying a thali or mangal shustra, or taking 7 steps around the fire, or performing Sirdhartha self-respect marriages introduced by Pair Arranger Anna will be wiped out by UCC. Already the 21st Law Commission, after 2 years of consultation, recommended not to bring UCC. The Constituent Assembly itself assured while enacting Article 44 that unless there is a consensus by all citizens of this country, the Uniform Civil Code should not be implemented. I would like to urge the Honorable Prime Minister through this August House that instead of thrusting a Uniform Civil Code that wipes out customs, we should adopt a rights-based approach to bring in equal rights for women, children and disadvantaged groups by encouraging dialogues, understanding and bring in gradual reforms within communities through social engineering to weed out undesirable practices. It is through these means that we can strike a balance between individual rights, freedoms and communal harmony. I thank the Deputy Chairman for giving me this opportunity. Sir, you should listen to us, then shouting, sir. Thank you. Please, no. Mani Sri Dr. V. Siudasan. Dr. V. Siudasan, please. Please, nothing is going on record. Sir, please. Javadekar ji, please. Please. Mani Sri V. Siudasan, please. Respected Chair. The painful incident has occurred in Silky You have to area speak for tunnel. 2 minutes because Mr. Sri Ajay Pratap Singh, Honorable Employee Associate. Sir, I am not here. Please speak for 2 minutes because Honorable Sri Ajay Pratap Singh will associate for 1 minute on the same issue. Sir, yes, there is time, sir. Sir, the Silky area tunnel incident, that is a very painful incident, sir. There, all security measures and the rule and norms are violated in that area. The company has violated, sir. Why this sad incident was happened? What was the inquiry report after the incident? Sir, this was not in the first time in that area. Earlier 17 times it was reported. The workers already told that. So the transparent inquiry, the fair inquiry is very necessary there. Sir, the entire world, in that day, 17 days, the 41 workers, they were in the tunnel. Sir, entire world was watched the incident. In that Silky area tunnel, the security violations, lot of violations are there, sir. There was no safety exist. Basically, the plan it was there, but really it was not there, sir. Then another thing, sir, the escape route was planned, but it was not it was not executed, sir. No trench gauges or safe tubes were not there, sir. Workers working in unprotected parts of the trench, so it should be ensured. The workers say that the hume pipes which were required per safety norms were not there, sir. This gross negligence of the part of the company, it should be ensured. Sir, the 59 Honorable Ajay Pratap Singh will associate on the same issue. Sir, Honorable Ajay Pratap Singh, please, on the same issue for 1 minute. Please. आप लोग प्लीज, आपको मालूम है कि जो एसोसिएट करते हैं उन्हें 1 मिनट और जो मुख्य बोलने वाले होते हैं उन्हें 2 मिनट सेम इशू पर. दिस हैज बीन द प्रैक्टिस. प्लीज, यस, ऑन द सेम टाइम, सेम इशू, 3 मिनट्स प्लीज. आप बोलें. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं.
माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, जनरल रिटायर्ड श्री वीके सिंह जी को और इस बचाव कार्य से जुड़े हुए सभी तकनीकविद, सभी सलाहकार, सभी रैक माइनर्स और सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बचाव कार्य को संपन्न कराया है और सारे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्लीज ऑनरेबल श्री एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, माननीय एब्सेंट, माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, माननीय श्री अयोध्या रामी, माननीय एडी सिंह, प्लीज प्लीज, प्रियंका जी प्लीज सिट। आपका नाम नहीं है लिस्ट में, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो। माननीय एडी सिंह, माननीय एडी सिंह, यू स्पीक, दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बोले, आप बोले, बोले, आप बोले। The National Green, प्लीज, माननीय श्री एडी सिंह जी, प्लीज स्पीक। the National Green Tribunal in 2014 banned all diesel vehicles. Please, nothing is going on record. Shri A.D. Singh ji, please. Priyanka ji, do not obstruct. Please, your name is not here. Please. Older than 10 years and petrol ones older than 15 years. The ministry has also issued a notification in 2023 for deregistration and scrapping all vehicles owned by the central and state government that do not comply with NGT order. Delhi government has issued orders for deregistration and scrapping vessels. Further, we know that older vessels are at risk to road safety, consumes more fuel and pollute the environment. To tackle the problem, the government has come out with a vehicle scrapping policy. Under this scheme, the persons opting for scrapping the vessels get incentive in the form of reduced registration fee and road taxes besides the incentives from the auto industry. As per government estimate, at present there are more than 1 crore vehicles that are required to be deregistered and scrapped across the country, for which government has approved 70 registered vehicle scrapping facility, out of which 38 are operational. However, the situation on the ground level, particularly in NCR, is totally different. There are lakhs of vehicles, including government vehicles flying, which has reached the 10 years diesel and 15 years 10 years petrol and 15 years diesel mark, adding to the cause of pollution. The whole purpose of NGT order and the government efforts are defeated by this omission on the part of the concerned department to take action. It is high time that all end-of-life vehicles should be deregistered and scrapped. Thank you. Thank you. Please. Manya Priyanka ji, your issue is a state subject. It has been not allowed. Please, it's not going on record. Please. Manya Shri Ajodhya Rami Reddy, not present. Shri Niranjan Vishi, Honorable Shri Niranjan Vishi, not present. Honorable Shri Vaiko, yes, you have given your issue. It's on concern for frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lanka Navy. You have given a subject. Please. Sri Vaiko, please. You do not want to speak? So, Honorable Sri Alaram Karim ji, your issue is there. Mani Sri Alaram Karim, need to increase share of central government in various important government schemes like PMAY, etc. Please. Sir, Mr. Chairman, sir. I have submitted please, an important issue related with the financial position of Kerala. My colleague Sandosh presented here that matter. With the development activities and other things, Kerala is facing acute shortage of finance. Sir, we request the Government of India to revisit the Financial Commission's definitions and the principle of fund allocations. Now, our
borrowing limit is drastically reduced. And some public sector companies, those who have taken loan for their purpose, it is also calculated as state borrowing. So that is a unfair practice. So far, such attitude was not taken against any state. Government of India's public sector, certain departments, particularly National Highway Authority, has taken huge loan. It is not calculated as the loan of Government of India. So these principles are to be revisited. And also the amount spent by the state towards land acquisition for National Highway, that is also introduced, taken by, borrowed by the KIFBI, the company constituted by the company. It is also calculated as a state borrowing. That is to be exempted from that calculation. And the decision... Question hour now. Question hour. Honorable members, the multimedia devices, MMDs, may not display the list of questions due to some technical glitch. Though it will be resolved very soon, the mics of honorable members may be switched off for a moment to reboot the system. Honorable members may kindly bear with the inconvenience. So now question hour. Those of the members who have an impression about it, I would be happy to receive them in my chamber, guilty for both the charges. Charge 1, that he intentionally and deliberately presented misleading facts to the media, misinterpreted proceedings of the council, resulting in affront to the authority of the chairman Rajya Sabha, and engaged in outrageous defiance of the resolutions of the House and directives of the Honorable Chairman Rajya Sabha. And charge 2, for including the names of members in proposed select committee without their consent in blatant transgression of Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. As regards the sentence, the committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. The committee stands committed to upholding the sanctity of parliamentary proceedings and safeguarding the integrity of the institution. The committee expresses hope that Sri Raghav Chadha, member, will reflect and introspect. The committee expects Sri Raghav Chadha to uphold the expected standards of conduct and decorum befitting a member of parliament. Honorable members, Sri GVL Narasimha Rao, honorable member, to move a motion in the matter. Sir, the mic is not out, sir. Press. Go ahead, sir. Okay. Sir, I move the following motion under proviso to Rule 256(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, that this House resolves that Sri Raghav Chadha, member, be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by him so far be taken as sufficient punishment, and the House may consider discontinuance of suspension of Sri Raghav Chadha, member, from the service of the Council from this day. Motion moved. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Raghav Chadha may attend the proceedings of the House. The Post Office Bill 2023, Shri Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the Post Office Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. माननीय मंत्री जी, आप बोलना चाहेंगे? Honorable Chairman, sir, 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि इररिलेवेंट हो जाएगा, विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434, जिसमें अब तक करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है, और डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते जो बेटियों के एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं। और कोट्टयम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है आज,
उसका ग्लोबल रिकग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू, उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है अति सरल भाषा में बना है। छोटा सा कानून है 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24, and second, demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे, मैं जरूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज के जरिए, किसी झंडे के जरिए, पंछियों के जरिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया, वो आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया।
आजादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट्स। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी, और उसी सोच के चलते आजादी के बाद जो भी सरकारें बनी उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया है। डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि यूपीसी से गई हुई डाक है, मींस इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया? यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विसेज इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication, has played a crucial role in country's social and economic development.
बहुत क्रूशियल रोल इसने किया है। आप इसको, कोरोना काल आया, समझ सकता हूं, सभी को लॉसेस हुआ, और इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए मंत्री जी को कहना चाहता हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश का नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थी। मुझे खुशी होगी मंत्री जी जवाब देंगे कि कितने वक्त से आपने वो स्पोर्ट्स कोटा के उन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब में नहीं लिया है, और क्यों नहीं लिया है। और आप जब लेते हो किसी को तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि अगर आपने एक नेशनल प्लेयर जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है, और अगर उसकी पोस्टिंग आपने ऐसी जगह की है कि जहां पे टेबल टेनिस के बच्चों को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा। आप रखिए उसको उस जगह पे जहां टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड बच्चे हो। उस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस यहां डिस्कस नहीं करता हूं, और मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो नया कानून लेके आए हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स वेरेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पोस्ट्स, it will have an exclusive privilege conveying letters by post as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, delivering letters. The bill does not certain such privileges. The bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing postage stamps. मैं एक और प्रावधान पे माननीय उपसभापति महोदय आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आप प्रावधान कर रहे हो उसमें प्रावधान है इस नए कानून की वजह से, द एक्ट स्पेसिफाइज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स. The bill provides that the post office will provide services prescribed by the central government. आप क्यों नहीं क्लैरिटी करते हो कि आप ये इनसे करवाना चाहते हो? कानून बनाना संसद का अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसा ग्रे एरिया ना रखे कि कानून बन गया है तो बाद में मुझे जो ठीक लगेगा वो सर्विसेज लूंगा मैं इनसे। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सोचेगी कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के ये पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाना है और इसके लिए मुझे ये रूट करना पड़ेगा, तो मैं रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो, कम विद अ क्लियर हैंड, कम विद अ क्लियर प्रपोजल. वी आर हियर टू डिस्कस एंड देन विल either pass or reject the bill, but we'll have an opportunity to express ourselves. आप इसका ग्रे एरिया, आज एक बार बार ऐसे बिल्स आते हैं मैं देखता हूं, हम पास तो करते हैं पर उसमें क्लैरिटी नहीं होती और बाद में नोटिफिकेशन के जरिए, बाद में कुछ अमेंडमेंट के जरिए सरकार उसको अमेंड करती रहती है. Now the another provision by this bill is power to intercept shipments. साहब, प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. मैं जानता हूं सिक्योरिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं लोगों की सुरक्षा के लिए आप करो, बट ऑन नेम ऑफ सिक्योरिटी, अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कंपनी का नाम है कि जिसका सॉफ्टवेयर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हमारे जैसे मुझे भी मिला एमपीज को
कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल। किस दिशा में हम जा रहे हैं? और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मैं मानता हूं इस बिल के इस प्रावधान को। और आप पावर्स कैसे देते हो? सर, आई विल टेक यू टू दोज प्रोविजंस। आई विल रीड what will happen after this bill. Powers to intercept shipments. The act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look at what are the grounds. An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency. Is there any clarity? What is public emergency? When you have objects and reasons, I fail to understand why government in objects and reasons not clarifying what is the public emergency. Thereafter, or in the interest of public safety or tranquility, एक wide range आपने दे दी। उसके बाद आगे आप कहते हो such interception may be carried out by the central government, state governments, or any officer specially authorized by them. Why don't you clarify? किस लेवल के ऑफिसर को आप स्पेसिफाई करोगे? क्या एक छोटे लेवल के अधिकारी को आप करना चाहते हो या किसी जिम्मेवार आदमी को करना चाहते हो? I'll come. An interception of shipment can be detained or disposed of by the officer in charge. The officer also have a powers to open, detain or destroy the shipment. डाकिया के ऊपर का भरोसा आपके ऐसे प्रावधान से चला जाए। आज एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा तो ये पहुंचेगा। आप ये प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं? हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और हम विश्व गुरु जहर की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बात को गौर से देखिए और मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधानों में आप क्लैरिटी लेके आइए कि किसको आप कब, कौन, कहां और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जब छोटी जगह पे नौकरियां देते हैं, लास्ट एक ही मिनट में करते हैं, तो वहां पे अगर आप पोस्टमैन को, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में गांव में किसी को नौकरी देते हो तो वहां के लोकल यूथ को आप प्राधान्य दें। उसी गांव का डोमिसाइल है, वहीं का रहने वाला है, उसको आप अग्रिमता दें। शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कोशिश करता है ट्रांसफर और करवाने की, वो गांव में टिकता नहीं और छोटा गांव परेशान होता है। तो उसी गांव का या विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं मिलता है तो स्टेज बताइए आप और वहीं के लोकल को रखिए, तो जहां रहेगा वो वही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात में खत्म करता हूं। धन्यवाद माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 12 मिनट आपके पास। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि पोस्टल बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस सरकार ने जो पोस्टल बिल 2023 लाई है, ये गरीबों के लिए और सेवा सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये विषय भी इसे पोस्टल बिल का केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति वर्गों के लोग आते हैं, इस व्यावसायिक वर्ग में, उन सबको ये पोस्टल बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा, ऐसा मेरा मत है। अभी मैं इसमें कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से
जो क्रमशः 2014 के बाद पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पर भरोसा बढ़ रहा था, उस भरोसे को पुष्ट करने का काम पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से किया है। सरकार ने इसको बैंक में परिवर्तित किया है। सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के रूप में भी कन्वर्जन इस सरकार के कार्यकाल में किया गया है। गरीब कल्याण, महिला कल्याण और किसान कल्याण योजनाओं का लाभ भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के द्वारा 7 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 5000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस खोले हैं। यही साबित करता है कि ये सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। यही साबित करता है कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब 5000 कुछ और खुलने जा रहे हैं, तो कहां 700 बंद करने वाली सरकार और कहां 10,000 बैंक को, पोस्ट ऑफिस को खोलने वाली सरकार। रोजगार का सवाल बताया गया है। ये अगर नए डाकखाने खुलने हैं तो किसी बिना मैन पावर के तो नहीं खुलेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी 5000 डाकखाने खोलने पे मिली है। तो जब ये 5700 डाकखाने खोलेंगे तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा। ये तथ्य भी समझ में हमको आना चाहिए। डाक निर्यात केंद्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, बॉक्स में उसका सामान रखकर टेपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कल्पना भी कभी हिंदुस्तान में नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र ठीक है कि 7-8 साल पहले हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है। पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमको जाना पड़ता था, मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था और अदर जिलों में जाना पड़ता था। आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में सुविधा मिली है, तो उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों का पोस्टपार्ट जारी करने का काम किया गया। टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट योजना ये भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का भी बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है और अब इसके सफल होने के बाद इसका विस्तार करने का संकल्प भी सरकार का है। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। डाकघर में डाक के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई और विकास को प्राथमिकता दी गई इस नए बिल में। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। पिछली सरकार का इस डाक के जो संबंध में विधेयक है, इसमें पिछली सरकार भी विधेयक लाई थी, लेकिन 1986 में विधेयक आया था जिसको राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए भेजा गया और जुलाई 1987 में अपने पद पर रहते हुए भी उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी सरकार और वो बिल वापस हो गया। ना उन्होंने संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले महामहिम राष्ट्रपति जी आए तो जनवरी 90 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और 2002 में वो बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी इस प्रकार का एक प्रयास हुआ पोस्ट ऑफिस के सेवाओं में सुधार के लिए बिल कानून लाकर, लेकिन वो भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। 2006-2011 में 2 ड्राफ्ट बिल जारी किए गए सदन के विचार के लिए, लेकिन वो ड्राफ्ट बिल भी स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच गए और उसके बाद सदन में उसका मतलब वो बिल का रूप में परिणित नहीं हुए मान्यवर। ये बिल 2023 सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और पास भी होगा। तो पिछले इतिहास को अगर हम देखते हुए कहें तो इस सरकार की संकल्प शक्ति, मजबूत संकल्प शक्ति है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बिल को जब पास कराएगी तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएं आम जन का भाग बनेंगी, ऐसा मुझको कहना है। सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। इस बिल के बाद महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा और महानिदेशक के जो निर्णय होंगे उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
डाक सेवा के महानिदेशक जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे। डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के भी नियम बने जाएंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्जेज और दरें तय की जा सकेंगी। डाक घर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा होगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुंचाए जाएंगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाया करती थी किसी युग में। आज ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का संकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार का है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था वर्तमान आतंकवाद के युग में और निजता, इसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मेरा इस संबंध में निवेदन है। लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। केंद्र सरकार वस्तुओं को पते पर पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। आइटम एड्रेसिंग मानकों, पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। यह छटाई की गई प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा। सबसे बड़ी बात इस बिल की यह है कि यह नागरिक केंद्रित सेवाओं को विकसित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए विधेयक लाया है। मोबाइल और फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में यह विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जहां योगदान देगा। भूस्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के निर्धारित किसी भी दायित्व के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं लेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुलनात्मक अध्ययन पिछले अधिनियम में और वर्तमान अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में 77 धाराएं थीं। डाकघर विधेयक 2023 में केवल 16 धाराएं। पत्र डाक पर एकाधिकार था पिछले अधिनियम में, डाकघर विधेयक 2023 में अब एकाधिकार नहीं। दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएं थी पिछले एक्ट में, इस एक्ट में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। फोकस है पहले था मुख्यतः मेल पर, डाक पर, अब डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएं उसके मोहल्ले में और उसके गांव में देने पर केंद्रित है नया विधेयक 2023। रिजर्व एरिया में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक को सरल करने का काम किया गया। दायरा पहले सरकार केंद्रित था डाकखाना, अब नागरिक केंद्रित है डाकखाना। ये इस विधेयक पोस्टल बिल 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित, डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को देय राशि को कवर करने का काम करेगा। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्ट कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब महानिदेशक में होगी। कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जन उन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के जिनके बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, सरकारों को कोई चिंता डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की नहीं थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। और इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएं जनता के दरवाजे पहुंचेंगी, जन उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नाउ ऑनरेबल श्री सुखेंदु शेखर राय जी। थैंक यू सर। आज मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच का माहौल ऐसा है
शायद उनका मन में ये पुराने गीत गुनगुना रहे हैं कि कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल के ये धड़कन ठहर जा, मिल गया मंजिल मुझे। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी, जो भी सफलता जिनको मिला है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। और आज के दिन एक ऐसा बिल लाया गया जिसके लिए मेरे मन में बहुत अफसोस है। मैं वो अफसोस जताना चाहता हूँ। पहले तो एक बात है कि मैं सिर्फ 2 क्लॉज का रेफर करूँगा। क्लॉज 9 सब क्लॉज 1, शक्ति सिंह जी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट may empower any officer to cause any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency or public safety, or upon the occurrence of any contravention of any of the provision of this act or any other law for the time being in force. Now, before I come back to this, if we look at clause 16, subclause 1, it says, the Indian Post Office Act 1898 is hereby repealed. तो रिपील हो गया वो पुराने एक्ट, लेकिन फिर क्लॉज 16 का सब क्लॉज 2 में बताया जा रहा है, notwithstanding the repeal of the act, all rules, notifications and orders made or purported to have been made under the Indian Post Office Act 1898 shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this act, and shall continue. So on the one hand it is repealed, on the other hand the other provisions which are not in consistence with this act shall continue. So, हाँ भी है, ना भी है. Sir, I am coming back to clause 9(1). This section, according to me, fails to specify the procedures to be followed for interception by the authorized postal officer. What is the procedure that shall be followed by the postal officer while intercepting? National security, everyone, every citizen of this country is concerned. We are also concerned. Had there been any provision that based on the information received from central agencies who are dealing with the national security point, then also we could have agreed to this provision. But mere suspicion, on the basis of suspicion even, that authorized officer can intercept, open, destroy, anything he wants to do. Sir, this is arbitrary. This is arbitrary. And in plethora of cases, the Supreme Court has held that arbitrariness in executive action is antithesis to law, antithesis to rule of law. This government has not even shown any respect to the hundreds of case laws which have established this point. So the grounds specified for interception is absolutely vague, that anything and everything can be brought under this provision. For example, the expression emergency, one of the expression is emergency, other than national security. But the expression emergency has not been defined, definition clause, that is clause 2 of this bill. So what is emergency? Nobody knows. Sir, this provision has given unbridled powers to the authorities concerned.
And I remember one of the Supreme Court verdict, which was given in 1996, in the case of interception of telecommunications, where the Supreme Court held, that was a 1996 case, that a just and fair procedure to regulate the power of interception must exist. Otherwise, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) as a part of the right to life, the freedom of speech and expression, and Article 21, right to privacy as a part of the right to life and liberty. It was reiterated in the People's Union for Civil Liberties versus the Union of India in 2004. Sir, in this context, I would like to refer another act passed in this year, the Jan Biswas Amendment of Provisions Act 2023, which removed all offences and penalties from many acts, including the Indian Post Office Act 1898, in the name of ease of doing business and ease of living. And virtually, in my opinion, the act has turned to be Jan Avishwas Act in as much as it has ensured a free-for-all situation for the wrongdoers in detriment to public interest. Sir, in this bill also, Clause 10, Subclause 2 provides, and I quote, "No officer of the post office shall incur any liability with regard to a service provided by the post office unless the officer acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery of service." However, what would be the consequences if any postal officer fraudulently act or willfully cause loss to service? There is no such provision. Sir, kindly, 1 minute. In the Parent Act of 1898, there was provision for imprisonment up to 2 years and fine or both. That has been. This bill does not whisper about the private courier services, and they have been excluded from the purview of the bill. This undermines the equality before the law. This is too much of laissez-faire. Sir, finally, I submit that this bill, if passed, shall create another avenue in transforming our democracy into a surveillance state after the Pegasus Gate. And this is why I oppose this bill in its entirety on behalf of my party, All India Trinamool Congress. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mani Sukhendu Sekhar Rai ji. Now, Honorable Sri P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. I raise to express my strong opposition to the Post Office Bill 2023 in its current form, as it will lead to winding up of post offices and its services in India. Bill is a step to privatize and encourage private players in postal services. The bill is introduced without studying the services required in the competitive world. It lacks a complete blueprint on infrastructural upgrades, technological intervention for sorting and facilitating accurate delivery of mails and parcels, and appears to be a hasty exercise just to replace old colonial laws. Our prestigious India Post, which is the world's largest postal network, has its presence across every nook and corner of our country, serves as a vital link connecting urban and rural India. Often viewed as a lifeline for 1.4 billion Indians, it plays a crucial role in our daily lives. The proposed bill, aimed at replacing the India Post Office Act 1998, needs an immediate reconsideration, as certain provisions could have far-reaching implications. Under Clause 9,
the central government can empower any postal officer to intercept, open, detain any postal article on the grounds of security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency of public safety. The provision grants unfettered powers to the union and officers to arbitrarily intercept, open or detain any postal article in the garb of national security or public safety. In the absence of any procedure or yardsticks or guidelines to be followed by such officers, such powers are nothing but another steps towards the surveillance state, which is violation in the teeth of Article 14, 19(1)(a) and Article 21 of the Constitution. It is pertinent to mention that the Honorable Supreme Court in a catena of judgments has upheld the ethos of right to privacy. I ask myself the question as to how any officer of the post office is qualified to undertake such functions which are in the nature of the search and seizure. By granting such powers, the privacy of all the citizens who use services of Indian Post is severely compromised, since there is no provisions in the bill which injuncts the officer from leaking any contents of the intercepted postal articles. A son will be writing to his mother, a husband will be writing to his wife, brother to his sister, a client to his lawyer, lawyer to the client, cabinet communications to the other departments. Can you intercept these communications as stated in clause 9? Will it not affect the privacy, or it will affect the confidential privileged communications which are protected under the law? Clause 10 exempts the post office from any liability with regard to the service provided by the post office. This provision is severely vague and suffers from the ambiguity on the phrase such liability in section 10(1) can be interpreted to be anything. The provision makes no regard to the value of the articles to be dispatched through post. Many private players, in case of any lapse of services, will provide options such as the value of the articles in the transit or money back guarantee. However, the Indian Postal Department seeks to absolve itself from compensating from any loss caused due to the lapses in services. This indeed can open the way for abuses, as the party empowered to impose such rules is an interested party. Though it prescribes liability for postal officers who are acting fraudulently or willfully causing losses, delay or misdelivery, the consequence of such action is not provided in the bill. This dilutes the provisions of the earlier Act 1898, which prescribes imprisonment, fine or both in the above cases. Clause 10 thus is highly arbitrary and discriminatory and push the people to skip the Indian postal services. The bill, under the statement of objects and reasons, aims to provide for a simple legislative framework to facilitate evolution of the post office for delivery of citizen-centered services. However, the provision shows that such evolution is only backwards. The bill grants the parallel powers to both the Union and also to the Director General to frame rules and regulations for conducting any functions essential for running of a post office. This highlights the ambiguity and overlapping powers of central government and the Director General in framing the rules and regulations for delivery of several postal services. I request this House, while we recognize the importance of modernizing our postal services to be competitive with the private players, and it's crucial to strike a balance that upholds constitutional principles, protects fundamental rights, and ensures accountability. Our rich postal heritage, serving millions across the nation, deserves a legislative framework that reflects the spirit of transparency, fairness, and citizen-centric governance, and not another source for surveillance state and affect the fundamental rights of speech and reputation. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Thank you, Mani Pibul Sanji. Mani Sri Raghav Chadha. सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल
2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन्ड और डिटेन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ 1. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 2. friendly relations with foreign states, 3. public order, 4. emergency, and 5. upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force. यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहे, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है सर। इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजीशन में आ जाते हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो
कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम के और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो लोग आप कह सकते हैं आलोचक हो सरकार के या विपक्ष के नेता हो, उनके फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। थैंक यू राघव जी। माननीय श्री निरंजन विसी, माननीय निरंजन विसी। Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the Post Office Bill 2023. Sir, the Post Office Bill will abolish the 125th year-old the Indian Post Office Act 1898. By virtue of this bill, the work of the Post Office can be easier. The bills aim to modernize postal services and merge them with Digital India. This includes offering online shopping, e-commerce solution, and digital payments. For this, I would like to congratulate our Honorable Minister of Communication, Sri Ashwini Vaishnav ji. Sir, the bill seeks to utilize the wide network of post offices to provide banking and insurance services closer to the poor, ST, SC, women, and farmers, to boost rural development. There is a possibility of creation of jobs through expansion of postal and financial services, especially in rural areas, which can contribute to economic growth and reduce employment. But sir, the central government will appoint the officer if that officer feels that any parcel is against the security of the nation or can disturb the peace, then that officer can stop the parcel, open it and check it, and can confiscate it, and later such items can also be destroyed. But law and order is a state subject, sir, so the state government should empowered to verify the articles. The bill makes India's postal services globally competitive and will boost trade and facilitate international delivery and logistics, and also promote financial inclusion in rural areas, which will promote rural development. But sir, there are 272,000 Gramin Dak Sevaks in India, working in 156,000 post offices, branch post offices. They call the GDS Gramin Dak Sevak, also known as postmaster, branch postmaster, and dak master in our rural areas. But sir, they perform the duty of postal life insurance, rural postal life insurance, India Post Payment Bank, Sukunya Samruddhi accounts, Mahila Samman accounts, delivering letters, parcel, articles, collecting and depositing of premium regularly. The Gramin Dak Sevak also distributing pension, stipend, wages of NRGS, wages of candle leaf pluckers in rural areas. But sir, the Gramin Dak Sevaks are not provided with traveling allowance or dinner's allowance or house rent allowance or pension or medical allowances, educational allowances for their children, leave benefit like regular employees of postal department. Sir, the GDS, Gramin Dak Sevak, those who are working in rural areas, they are doing more than 8 hours duty, but in some areas, some villages, there are no internet service, and most of our Odisha, in our Odisha also, in rural areas, in western Odisha and southern Odisha, there are no post offices in various big villages and panchayat offices, and also, sir, there are no internet connectivity. So the postmasters are the postmaster, branch postmaster, dak masters, they are facing a lot of problems because they are using the digital mode services. So therefore, sir, I request our Honorable Minister to conduct survey in rural villages, rural areas,
to provide better service for the farmers and women self-help groups and the students living in the forest villages, rural areas, and to make provision of internet connectivity and also communication facility. Sir, I draw the kind attention of Honorable Minister of Communications, Sri Ashwini Vaishnav ji, through you, sir, that the GDS, the Gramin Dak Sevak, the postmaster, branch postmaster, should be provided with departmental status and their service should be regularized. Also, their insurance benefit, group insurance benefit and gratuity should be enhanced from 1.5 lakh to 5 lakhs. Encashment of unutilized leave bill for 180 days. And increase service discharge benefit scheme from 3% to 10%, sir. And, sir, the implementation of the recommendation of Kamalesh Chandra Committee report in favor of the Gramin Dak Sevak. The committee observed that the postal department depends on the successful management of the Gramin Dak Sevak. So, the Gramin Dak Sevak are the soul of postal department, sir. And it is difficult to survive without a soul. So, their demand be fulfilled. Sir, with this, on behalf of my party, BJD, and my leader, Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik ji, I support this. Thank you. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy Ala. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to share a few of my thoughts on the proposed amendments to the Post Office Bill 2023. Sir, there haven't been any amendments to this Colonial Act in the past 125 years, and I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in Parliament. There are few positives of this amendment. This bill increases the authority of the central government to intervene in such situations involving vital aspects such as security, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorized transportation of drugs and contraband products via postal services. Thus, I applaud this positive approach in addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network. Flexibility in pricing. There is also an enhanced pricing flexibility is considered in this bill, which is critical, especially in the context of an increasingly competitive business, which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations. Furthermore, the service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its service remain affordable, accessible, and sustainable, even with economic conditions getting changed. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services. Also, generalizing the nomenclature of interception of parcels. Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the bill introduces significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. The key distinction is in the usage of technology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances, while the new bill, on the other hand, has broader and more inclusive phrasing. Recent data shows an increase in security threats and illegal activities related to postal system, not only in India but also globally. This purposefully change in terminology serves an important purpose as it broadens the scope of interception beyond the constraints of specified items, embracing a
broader range of potential security threats and criminal activity involving mail shipments. By taking a more general stance, the measure recognizes the changing nature of security concerns. However, there are certain problems pertaining to this bill, and I would like to highlight a few of them, and I provide my suggestions to this. Powers relating to interceptor postal articles. It lacks procedural safeguards, raising concerns about potential violation of individuals' freedom of speech, expression, and privacy. Additionally, the ground of emergency as a basis for interception may surpass reasonable restrictions outlined in the Constitution. The term emergency lacks a precise definition, providing a broad scope for interception. This goes against constitutional principles established by the Supreme Court and requires more clarity. Exemption from liability for lapses in services, that also need to be looked at. The removal of offences and penalties. The absence of provisions for offences and penalties as they were removed in Jan Vishwas Act 2023 remains another issue. As per the earlier act, various offences committed by officers of a post office, which included the illegal opening of postal articles by a postal officer were punishable. However, now such actions would have effectively no consequences. It raises questions about ensuring the privacy of individuals and may have adverse implications. Regulation of courier enterprises. Although the bill gives India Post Authority to improve its postal service operation, it is critical to recognize that regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. Issues faced by the employees of the department, my other colleagues have mentioned, I want them to be taken note of that. The key issues affecting the functionality of the system also need to be taken into consideration, the post offices lack necessary infrastructure to function successfully as points of service and information transformation. Issues such as intermittent power supply, outdated manual operations, limited accessibility shall still remain a problem. The revenue deficit also need to be taken into account. So while I see that there are few issues that where we have given suggestions, but we strongly believe that this amendment is coming at the right time. The